ओके जी। ठीक है, हम आज का योग कार्य शुरू करते हैं। आप सभी को धन्यवाद। पहले ओम का उद्गीत करते हैं 3 बार। तब आसन, प्राणायाम और ध्यान। ओ ओम शांति शांति शांति। ठीक है, तो आज का योग का कार्य शुरू करते हैं। आज हमारा नया वर्ष भी है और 2 तारीख का था। आज 3 तारीख है ना। तो आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। विक्रांत सम्राट 2079 ईयर्स। वो कलयुग की उम्र से 5123 ईयर्स। तो ये जो है इसे कहते हैं 7वां मंत्र, 14 मंत्र में से। तो 7वां मंत्र में हम हैं। तो वैसे 14 मंत्र होता है, तो लगभग हाफ ऑफ द मंत्र 14 में से आधा गया है कलयुग का। 4 कलयुग बनाता एक महायुग। तो लगभग 71 महायुग होते हैं, जो एक कल्प बनाता है। तो एक कल्प होता है ब्रह्मा का 4.32 बिलियन ईयर्स। ब्रह्मा का दिन होता है, उसी तरह एक ब्रह्म रात्रि होती। तो 8.96 बिलियन ईयर्स का एक ब्रह्मा का एक क्रिएशन होता है। तो ऐसे हजारों क्रिएशंस है। तो वेद के अनुसार ये हमारा नया साल है, तो इस पर आप सभी को शुभकामनाएं। ठीक है, आसन का कार्य। आसन करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, सूक्ष्म व्यायाम। पहले करते हैं चक्की आसन। तो चक्की चलाना, अपने देह को थोड़ी ओपन अप करें, पेट को, हाथ को, पैर को घुमाएं, चलाना ऐसे घूम घूम से राउंड करें, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर हाथ ले जाते हैं ऊपर से नीचे, पश्चिम उत्तानासन। ऐसे अपने हाथ पैर को खोलना, इसे थोड़ी मूव करना। जीवन का नियम ही है कि हम चलते रहें, कुछ करते रहें। बैठना देह के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है। सोना तो जरूरी है कि रिपेयर बॉडी के लिए, लेकिन उसके अलावा सूरज के साथ ही काम करें। तो समय से सब चीज होता है, समय का दुरुपयोग मत करें। तो ऐसे घुमाते हैं। आप एंकल का एक्सरसाइज रोज करें। एंकल में बहुत दर्द होती है ना, पैर में, घुटने में, इसका एक्सरसाइज से आप खोलिए दोनों एंकल पर चलाना, फिर अंदर का इसको घुमाना, राउंड गोला करना, गोला बनाना दोनों तरफ का बनता। आप करते हैं स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस एनर्जी सेंटर्स के लिए। पहला है मूलाधार चक्र। तो इसको राइट एंकल आप लेफ्ट
नी पर रखे हुए इसको दबाना, फिर ऊपर ले आना, फिर दबाना, फिर ऊपर लाना, एक बार और। पैर को घुमाइए, एंकल को ऐसे चलाएं, गोल 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 करें, ऐसे घुमाना, फिर गोद ले लें अपने पैर को और चलाते हैं इसको। और हो गया एक्सरसाइज हिप बोन पर। तो राइट तरफ हुआ, इसको खोलकर घुमाते हैं और थोड़ा अंदर का, बाहर का, और फिर हो सके तो इसे ले आइए जितना नजदीक हो सके, टच योर नोज विद इट। फिर प्रेस करते हैं नीचे की तरफ। आप यही करते दूसरी तरफ से, आप चला लेफ्ट एंकल को राइट नी पर रखें और लेफ्ट नी को ऐसे फ्लोर की ओर दबाएं, से नीचे दबे, घुमाइए अपने पैर को, एड़ी को, कोहली को, थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं। क्लॉकवाइज घुमाना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर हाथ में ले लें अपने पैर को और इसे थोड़ा झुलाते हैं ऐसे। फिर इसको खोलना और अंदर की ओर फिर चलाना, और हो सके तो जितना नजदीक हो लाइए, फिर पैर पर घुटने को दबाइए जमीन की तरफ। ये हुआ मूलाधार का एक्सरसाइज। दूसरा स्वादिष्ठाना का, तो इसको तितली आसन, बटरफ्लाई पोज में बैठकर ऐसे दबाएं, घुमाएं, चलाएं, विंग की तरह अपने पैर को चलाते हैं, चलाना हो गया। और इसके बाद में अब स्वादिष्ठाना के बाद में होता है मणिपुर। मणिपुर के लिए आप अपनी नाभि को थोड़ी दबाएं, गोला घुमाए, बैक का एक्सरसाइज हो जाता है, शोल्डर्स का भी, सामने पेट का, नाभि का, दबता ऐसे। 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज करें। तो करते बिटवीन 3 टाइम्स ईच, तो अप टू 21 टाइम्स, जितना आपके पास समय हो उसके अनुसार आप कीजिए, अपने हेल्थ के लिए करते रहे। आप करते अनाहत हृदय चक्र के लिए, चेस्ट का एक्सरसाइज से घुमाना, नेक का हो गया, मूलाधार, अरे अनाहत विशुद्धि दोनों का एक्सरसाइज होगी। इसे घुमाते, हाथ को पकड़कर ऐसे इसको दबाना, ले जाए जितना से 1 2 3, और दूसरी तरफ 1 2 और 3, और हाथ ऐसे दबा ले, 1 2 3 4 5, दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 हो गया। ओके, तो चलो ऐसे चलाना, ऐसे फिर घुमा लेते हैं थोड़ी और। ओके जी, ठीक है। कोई आपको चल रहा है क्या? तो हम मूलाधार कर रहे थे, देखते हैं कुछ हुआ क्या हुआ। अच्छी बात, सब ठीक ही लगा। ओके, तो अब की बार करते हैं, पैर को उठा ले, बैठना पद्मासन में हो जाए, ऐसे बैठे, इसको रोज थोड़ी थोड़ी करते रहे, और फिर उसको उठाना, ऊपर ले जाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी पर रहे। और अपनी अनाहत का, विशुद्धि का, मणिपुर का और एक्सरसाइज हो जाए। घुमाए, घुमाते हैं स्पाइन, बैक का एक्सरसाइज हो गया, वर्टेब्रा का। 1 2 3, दूसरी तरफ 1 2 3। अब सामने ऐसे उठकर अपनी लंग्स को एम्प्टी करना,
एक्सेल करते हैं। ऐसे ही बैठे रहे, अगर हो सके तो आप पूरी की पूरी नीचे चले जाए, ऐसे होकर ब्रीद आउट करना, आ जाए। फिर आप पैर लंबा करते और अपने हाथ के सहारा से कोशिश करें उठने को। अब स्ट्रेच करें बैक का, थाइस का, पूरी नेक तलक। 1 2 3 4 5। आप ऊपर जाए टेबल टॉप की तरफ। 1 2 3 4 5। लेट जाए और सामने पेट का एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। पहला पैर पश्चिमोत्तानासन, अपने पैर को ले आए साथ में, जितना पीछे हो सके ले जाए। ठीक है, आपकी बात शोल्डर स्टैंड ले जाए ऊपर, पुश करें कितना हो सके, ऊपर ले, रोक ले। 1 2 3 4 5। पैर को खोलना, अपने खून ब्लड सर्कुलेशन ऐसे नीचे की तरफ आने देना, साइकिल करें, पैर को आगे की पीछे की खोलना, आगे का पीछे, ऐसे थोड़ा देर ऊपर रहना। हलासन, जितना हो सके अपने आप को पीछे ले जाए। आप सामने का एक्सरसाइज, पैर घुमाए, 1 2 3 4 5। फिर दूसरी ओर 1 2 3 4 और 5। और पैर का घुटने का एक्सरसाइज चलाएं, फिर सर्कुलर वे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों पैर का थोड़ा थोड़ा ऐसे एक्सरसाइज करते रहे, ठीक है। फिर से एक बार घुमाना पैर को और साइकिल करना, रोक ले जाकर ऊपर में, ठीक है, जितना ऊपर हो सके। 1 2 3 4 5। मध्यम जगह पर ऐसे बीच में रोककर 1 2 3 4 5। नीचे में रोक ले थोड़ी सी ऊपर जमीन से, 1 2 3 4 5। फिर मध्यम 1 2 3 4 5। एक बार फिर ऊपर 1 2 3 4 5। फिर मध्यम 1 2 3 4 5। थोड़ा और नीचे 1 2 3 4 5। हो गया, आराम करें और आराम के साथ अब ले आए अपनी नी अपनी नोज की तरफ, पुल करें जितना हो सके। ओके, 1 2 3 4 5। दूसरी पैर को इसी तरह से 1 2 3 4 5। अब दोनों पैर साथ में ले लें, अपने आप को से गोला बना ले, 1 2 3 4 5। अब इसी पोजीशन में अपने आप को ऊपर और नीचे लाए, मसाज करें, बैक आगे पीछे का सब चलता रहे ऐसे थोड़ा देर के लिए, 3 बार करें। फिर ये इसी पोजीशन में आप घुमाइए अपने शरीर को, पहले दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं बाएं दाएं बाएं। ठीक है, हो गया 3 बार। आपकी बात ऐसे करते आप करते मातृशासन, तो पवन मुक्त हो गया, पवन मुक्त हो। आप मातृशासन पुल करना अपने आप को ऐसे, लिफ्ट नेक के जगह से लिफ्ट, पैर को सीधा कर ले, 1 2 3 और ऊपर आए, पैर को घींच ले और चक्र धनुष की तरह ऐसे बनाए अपने आप को, हाथ शोल्डर्स के पास,
पुश करना ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से नीचे, अपने नेक को सपोर्ट करें हाथ से, ankles together, knees together, and now twist your knees towards the right side while you're looking to the left. Do the opposite. So side, अपनी पेट की साइड की एक्सरसाइज ऐसे से घुमाए, करें, से घुमाए, अब करें, घुमाते रहे दोनों की तरफ, ऐसे ऐसे हुआ, दोनों हो गया। अब करें नवासन, पोटासन, रोकना अपने आप को, ऐसे बीच में 1 2 3 4 5, पैर चढ़ाए लेफ्ट तरफ, ऐसे रोकना और सामने आ जाना। बैठ जाते हैं गौमुख आसन, तो अपने आप को पुल करें, राइट नी पर, एंकल पर बैठते हैं, knees pulled inside, left ankle over your right knee, twist your body as far back as possible, yeah, and try and hold your fingers over your neck. 1 2 3 4 5, touch your knee, 1 2 3 4 5. Change side, right ankle over left knee, push your left ankle back, far back, and try to twist your body. 1 2 3 4 5, ऐसे पीछे को जाना, 1 2 3 4 5, और हाथ पीछे ले जाए। अब की बार राइट हैंड ऊपर से जा रहा पीछे, की लेफ्ट फिंगर्स होल्ड करना, 1 2 3 4 5, और नी को टच करना, 1 2 3 4 5। हो गया। तो गौमुख था, उसका ऐसे वेरिएशन है, इसका ऐसे घुमाना, 1 2 3 4 5, दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। अब बैठ जाए, बैठकर थोड़ी आपको प्रेशर करते हैं, अपनी पैर की जो सोल है उसको दबाना, धीरे धीरे पूरी बिगिनिंग ऊपर छोटी से लेकर बड़ी जो टो है सबको थोड़ी मसाज करें। फिर साइड में ऐसे हॉरिजॉन्टली अपनी सोल पर ऊपर से लेकर पूरी हील की तरफ इसको दबाएं। ऐसे नहीं हो तो क्लैप करते हैं, तो क्लैप कर लें, पैर से क्लैप करना, सामने का पैर का ऐसे धीरे धीरे दबाना, जहाँ दर्द हो कहीं पर पेन हो उसको आप दबाएं। तो हाथ का ऐसे करते हैं, एक ऐसे फिंगर्स जो है उसको चलाना, दबाना धीरे धीरे से, फिंगर्स का हो जाए ऐसे, या सब आप सामने हो गया, सामने की तरफ हाथ का मसाज। फिर हम रेडियल आर्टरी को ऐसे मसाज करते हैं, नाइस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर जठर अग्नि का बैलेंस करना, आपको पता ही है, 2 साल हो गया ना करते करते इसको, आपको तो रूटीन पता है ऐसे इसको चलाना, लेकिन रोज करना पड़ता है। आप इसका इफेक्ट चाहेंगे तो रोज अपनी निजी जिंदगी में योग का जो कार्य है उसे फिट कर लें। जैसे आप उठते हो अपना निजी काम वगैरह करना, उसी तरह से एक कार्य को आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड करना पड़ेगा, तब अंतर आता है। एक रोज करने से तो थोड़ी हाई फील करोगे बस, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी ऑटोनोमिक सिस्टम, सबकॉन्शियस वैसोवैगल टोन स्टिमुलेशन जो होता है इससे, उसका इम्पैक्ट जब होने लगेगा तो हेल्थ अच्छा हो जाएगा, आपकी मन की स्थिति अच्छा बनेगी। तो ये जो स्ट्रेस है ना, बोलते रहता हूँ कि आप अपनी सामने का ऐसे माथे पर दबाएं, पीछे का, नेक का, ऊपर का, चिन का, ऐसे जितनी स्ट्रेस होती है सब इसी जगह में होती है। तो ब्रीदिंग मेटाबॉलिज्म के लिए लेफ्ट फिस्ट बनाए, राइट आर्मपिट के नीचे, राइट नोस्ट्रिल से सांस अंदर ले, बाहर से
बाहर करें, ऑपोजिट तरफ से सांस अंदर, अब दूसरी तरफ से। तो अग्नि शक्ति, चंद्र, मून और सन का इम्पैक्ट बॉडी पर, ठीक है। लेफ्ट से सांस लेते, राइट फिस्ट बनाकर लेफ्ट आर्मपिट के नीचे, लेफ्ट से सांस अंदर, राइट से बाहर। ठीक है, हो गया। अब थोड़ी रिस्ट की एक्सरसाइज, ऐसे पुल कर लें। पहले मुझे भी बहुत दर्द होता था जब मैं बराबर नहीं करता था योग, तो शोल्डर नेक पेन काम करने से। तो जब रोज आप ऐसे करेंगे लाइफ में, तो फिर आपकी छोटी छोटी दर्द होती है, स्टिफनेस, पेन, आपकी फ्रस्ट्रेशन लाइफ का धीरे धीरे चला जाएगा। करते रहिए, कोशिश कीजिए थोड़ी दिन। अच्छी चीज के लिए थोड़ी ज्यादा डिसिप्लिन होना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। जो बुरी चीज है, जैसे लेजीपन, तामसिक स्थिति, खाना पीना, गॉसिप करना, ये सब बहुत इजी होता है उसमें, क्योंकि जो हमारी मन है, मन की जो अट्रैक्शन है, जड़ है मटेरियल थिंग। तो एक वेल होती है ना, माया की जो इल्यूजनरी इंप्रेशन है, उसी में बझे रहना मन की नेचुरल स्टेट है। तो उससे निकलने के लिए ये सब तभी से डिफिकल्ट पड़ती है। कितने लोगों को इच्छा होती है अच्छे काम करने के लिए, लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि आप मन पर ही डिपेंडेंट हो। मन जड़ है, जड़ की अट्रैक्शन मटीरियलिस्टिक और ऐसे सिंपल सेंस बेस्ड थिंग्स केवल होती। तो हो गया, ठीक है। आप करेंगे प्लैंक या पुशअप्स करें, थोड़ा पेट की एक्सरसाइज, बैक की एक्सरसाइज। आप इस उल्टी होकर पहले पेट की तरफ से करते सामने का, अब बैक की ओर से करेंगे। पहला चीज आपका, आप प्लैंक पर हो जाए या पुशअप्स करें, जितना जो कुछ हो सके करते हैं। गया 100 हो गया, मैं 100 बार करता हूं पुशअप्स, ठीक है। अब इसको, स्ट्रेन हुई है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप अपने शरीर को पूरी की पूरी लंबी बना ले। आधा ऊपर की तरफ आप पुश करें, नीचे की ओर आधा बॉडी पीछे की ओर था, स्ट्रेच होगा पूरा शरीर। 1 2 3 4 5। अब इतनी सेकंड में जितनी स्ट्रेन हुआ बराबर हो गई। आप आराम करें, अपने से एल्बो पर कोनी को इसे सहारा दे, रोक ले अपने फेस से, रेस्ट कर पैर अपनी जो हील है मूव करें towards your bum. So keep moving your legs while you are relaxing still. Yeah, so बुढ़े आजा का एक्सरसाइज है, घर में बूढ़े लोग होते हैं ऐसे करते रहते हैं ना, आपने नोटिस किया होगा। आपकी बात, अपनी आधी बॉडी जो ऊपर सामने का उसको ऊपर ले जाए, फिर घूम कर आप देखेंगे राइट तरफ, राइट एंकल को ऊपर जाए। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाइस एंड गुड स्ट्रेच ना, ठीक है, आपको लगेगा चेस्ट का, साइड वॉल का। अब की बात सर्पासन, स्नेक पोज, हाथ सामने बांध ले, पैर को बांध ले और अपने आप को घुमाए सर्प की तरह, ठीक है। ऐसे दाएं बाएं
दाएं बाएं दाएं बाएं, एक बार और इसको बॉडी को ऐसे घुमाना। जो साइड में होती, साइड का मसल्स कभी कभी एक्सरसाइज नहीं होता ना, तो तभी ये जो आसन है इससे आप करते हैं। अब हाथ साइड में करके पैर को दोनों ऊपर ले जाए, स्ट्रेट कर कर ले जाए, जितनी ऊपर हो रोक ले। 1 2 3 4 5, नीचे आए, फिर जल्द ही ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बार और नीचे छूकर फिर ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, नीचे आ जाए। नाक से सांस अंदर, नाक से बाहर। अब दोनों पैर को बांधकर ऐसे ऊपर ले आना, ठीक, पकड़ ले, ऊपर उठाए, धनुष्यासन, ऊपर ले जाए जितना हो सके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपकी बार सांस अंदर लेकर जब ऊपर निकालते हैं तो अपनी बॉडी को थोड़ी बॉल की तरह मूव करें, जैसे रोटेट मूवमेंट हो उसमें। 1 2 3 4 5। अब साइड साइड, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। हो गया। आराम के साथ में हाथ अपने चेस्ट की लेवल पे ले आए, लेफ्ट एंकल से राइट नी को सपोर्ट कर कर सांस बाहर करते हुए ऊपर आए। 1 2 3 4 5, नीचे। अब राइट लेग से लेफ्ट नी को सपोर्ट करते सांस अंदर बाहर करते हुए ऊपर जाए। 1 2 3 4 5, हो गया। नीचे की तरफ। अब की बार और स्ट्रेच करना पेट को, राइट ले भीतर की ओर कर ले, लेफ्ट स्ट्रेट हो गया। अब लेफ्ट हैंड से आप नी को टच करेंगे, राइट को स्ट्रेच करें सीधा और लंबे हो जाए। 1 2 3 4 5। सेम चीज उल्टी तरफ से, लेफ्ट लेग अंदर हो गया, ऐसे आपने पुल किया। अब की बार आपकी राइट लेग स्ट्रेट हो गई, लेफ्ट हैंड स्ट्रेट, राइट हैंड से आप दबा रहे हो, अपने आप को नीचे की ओर ले जा रहे हैं। 1 2 3 4 5, हो गया। आप बैलेंसिंग करना एक पैर पर से, रोक ले, राइट नी पर रोक रहे हैं आपके, आपको लेफ्ट लेग ऊपर है, राइट हैंड भी ऊपर है, स्ट्रेटन अप। 1 2 3 4 5, सांस अंदर और बाहर, फिर ऊपर जाए लेफ्ट लेग पर। 1 2 3 4 5। आपकी बार ऊंट आसन, ऊंट की तरह अपने आप को सांस अंदर लेकर ऐसे ऊपर आए, बाहर करें, पेट को दबा ले, भीतर उसको घुमाना। 1 2 3 4 5, फिर सांस अंदर, ऊपर जाकर बाहर, उल्टी तरफ घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5, फिर से सांस अंदर बाहर घुमाना। 1 2 3 4 5, सांस अंदर, फिर बाहर घुमाते। 1 2 3 4 5, एक बार फिर सांस अंदर बाहर। 1 2 3 4 5, and one more last time. Breathe in, breathe out, make yourself like a hump, push your belly button in, move your belly button round, 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 and round. Now बालकासन, अपने आप को स्ट्रेच करें, नीचे जाकर आराम मिलता है इसमें। 1 2 3 4 5, उल्टी हाथ से नमस्ते की पोजीशन में कर लें, हैंड्स ऐसे पीछे का, नमस्ते हो गया। अब नीचे जाए फिर से। 1 2 3 4 5, ऊपर आ जाए स्थिर आसन में, नी पर होकर अपने आप को पुश करना पीछे की ओर।
ठीक है, जितना हो सके पीछे जाए, ऐसे हाथ दोनों का पीछे का, 1 2 3 4 5। अब बैठ जाते हैं इस पर, अपने घुटने, अरे एड़ी पर बैठकर पीछे की ओर जाए जितना हो सके, 1 2 3 4 5। अब आपकी बात पूरी की पूरी आप नीचे चले जाते हैं जमीन की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से ऊपर आ जाए, वज्रासन में बैठते हैं। यह है वज्रासन। इसमें बैठना डाइजेशन बहुत अच्छी अच्छी कार्य होती पेट के लिए। ठीक, इसमें बैठकर पहला करते हैं। ठीक है, मन तो आप अपनी दबा लें, पेट की जो ओगन्स होती है, पेनक्रियास वगैरह, उस पर प्रेशर डालना, दूरी होती है वहां पर हाथ ऐसे बनाकर रख लें। नीचे सांस लेते हुए बाहर करते हुए जाए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब की बार थोड़ी और प्रेशर डालते हैं, लेफ्ट हैंड से दबा लें, नीचे जाकर सांस बाहर करेंगे, कपालभाति करेंगे। अब दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड को दबाते हैं, राइट पाम से अपना नीचे जाकर कपालभाति। तो आप पेट की इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज करते हैं, ओगन्स सिक्रीशंस वगैरह उसका। आपकी बार अपनी लेग को लाइन बनाकर ऊपर ले जाते हैं, दूरी की नाभि की बराबर पर, साइड में किडनी वगैरह उसका प्रेशर नीचे जाना। 1 ठीक हो गया। तो हमने की मंडूकासन थे, वो मंडूकासन हो गया। अब हाथ को खोल लेते हैं और अपनी आईज की एक्सरसाइज, नेक की एक्सरसाइज जो बची थी अब उसको कर लेते हैं। नेक स्ट्रेट, move your eyeballs towards the right hand, look by the getting the attention by your fingers and keep it there. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Do the same to the left. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब इसको डायगोनल में बना ले, राइट तरफ ऊपर देखना, जो मसल होती राइट ऊपर आंख का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे किया ऑपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुमा ले ऑपोजिट, लेफ्ट हैंड अप, superior oblique on the left side, the muscles of the eye. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे की तरफ राइट हैंड inferior oblique। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से हॉरिजॉन्टल हो जाए, राइट की तरफ क्विकली। 1 2 3 4 5। लेफ्ट की तरफ 1 2 3 4 5। आपको पता लगेगा खूब आपकी मसल्स जो है आंख की चल रही हैं। अब सीधा बैठे, हाथ घुटने पर रख ले ऐसे और दूर देखिए, जितना दूर हो सके देखिए। फिर जल्द से आप देखिए अपनी टिप ऑफ नोज, दूर नजदीक, दूर नजदीक, दूर नजदीक। अब घुमाते हैं इसको। 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12। अब ऑपोजिट चलते हैं। 12 9 6 3 12 9 6 3 12 9 6 3 12 हो गया। अब इसी तरह भूले नहीं, थोड़ी नेक की एक्सरसाइज कर लेते हैं। धीरे से इसको घुमा लें, धीरे से इसका। आपकी बार अपनी चिन का मसल, नेक का मसल, लेफ्ट हैंड से सपोर्ट करें, लेफ्ट नी पर आपकी ताकत लगेगी। राइट हाथ ऐसे रखिए, इसको जोड़ दीजिए और पुश करें। 1 2 3 4 5। लेफ्ट तरफ सेम चीज। 1 2 3 4 5। अब नीचे की ओर 1 2 3 4 5। सामने की ओर 1 2 3 4 5। पीछे की ओर
हाथ बांध कर रोक लें गले नेक का पीछे, 1 2 3 4 5। अब शोल्डर्स का एक्सरसाइज, एल्बो भीतर लाइन घुमाए, 1 2 3 4 5। अब की बार ऑपोजिट, 1 2 3 4 5। हो गया। तो आपकी एक्सरसाइज हो गई नेक का, हेड, आईज, एल्बो, शोल्डर्स का, एल्बो का, पेट का, पीछे का, सामने, पूरी एड़ी से लेकर ऊपर ले एक्सरसाइज हो गया जी। अब जो थोड़ा सा है उसका इसका उसमें बैलेंस करना, ऊपर ले जाकर 1 2 3 4 5 हो गया। साइड में आप कर सकते हो तो कीजिए, ऐसे करना। अभी थकावट ज्यादा हो जाती तो फिर नहीं होगा, कोई बात नहीं, कोशिश करते रहे। सामने का पेट पर रोकना, आपकी आप खड़े होते हैं, ऊपर चलते हैं। Every week I say this thing, try and actually grow your strength in your tummy so you can stand up without using your hands. Yeah, like this. Come up. Yeah. तो खड़े हो जाते हैं। आप करते हैं अपनी एक्सरसाइज खड़े होकर करना। ओके जी, तो इसको थोड़ी ऊपर की ओर करें, पता ठीक। हाँ, ओके, खड़े हो गए। पहला करते हैं अपनी चेस्ट खोलना, तो खूब अच्छी सी ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, और पुल करें, ब्रीथ इन एंड आउट। जंप 1, ठीक है। आपको अपने पता चलता है कि अब इसमें जब खड़े होकर करते थोड़ी कार्डियो हो जाती है एक्सरसाइज और हार्ट रेट इंक्रीज होती है। तो अपने कर लेते हैं। पहले बैक का मूव करना, स्पाइन वर्टेब्रल बोन्स का है ना एक्सरसाइज, स्पाइनल जो स्पाइन है पीछे की, उसको थोड़ी थोड़ी महीन से इसको घुमाना, तो समय मिले घुमा लिया करें, स्ट्रेच करें, ठीक है। तो इसको अब नी का घुमाना, अंदर से बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, अब घुमाए उल्टा, बाहर से अंदर आए, ऐसे घुमाते हैं। ओके जी, आप करते हैं अंजलि आसन, तो ऐसे हाथ सामने का, नीचे जाना, पूरी की पूरी से मलासन में बैठना, 1 2 3 4 5, ऊपर जाए। अब की बार कान को पकड़कर बैठ 3 बार करते, नीचे जाए, फिर नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, फिर नीचे आकर बैठ जाते थोड़ी देर के लिए, 1 2 3 4 5, ऊपर आ जाना, ठीक, वेरी नाइस। ओके, आप करते हैं 3 स्पेसिफिक आसन। पहला है वृक्ष आसन, पेड़ की तरह खड़ा होना। तो पहले अपनी दोनों टो पर हो जाए, ऊपर ले जाए हाथ, इतना उसके रोकते, 1 2 3 4 5। आप करते हैं एक पैर पर रोक लेते हैं अपने आप को, 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ चलते हैं, घुमा लें, पैर को जितना उसके ऊपर ले जाएं, स्ट्रेट, 1 2 3 4 5, और स्ट्रेच करना अपने आप को, पुश करें एक हाथ से, और नी बेंड कर कर जितनी हो सके जाइए राइट की तरफ, 1 2 3 4 5। आराम करें अपने घुटने पर राइट हैंड से, और पुश योरसेल्फ फर्दर, 1 2 3 4 5, पूरी स्ट्रेच हो जाती। दूसरी तरफ हम वही काम करते, 1 2 3 4 5, हाथ को सहारा लेकर और स्ट्रेटन अप, 1 2 3 4 5, हो गया। धीरे से ऊपर आए, खड़े होकर वॉरियर पोज,
घुमाना अपने आप को, सामने की ओर देखना, 1 2 3 4 5 करते हैं चंद्र आसन। तो मून सैल्यूटेशंस, पहला है त्रिकोण आसन। तो आप ले जाइए राइट हैंड, राइट एंकल, लेफ्ट को ऊपर देखिए, 1 2 3 4 5, नीचे लाए 1 2 3 4 5। अब की बार अपने आप को ले जाए नीचे, जितना हो सके हाथ का सहारा लेकर नीचे जाना और उठ जाना ऊपर, 1 2 3 4 5, घूमकर राइट एंकल पर बैठ जाए, 1 2 3 4 5, ऊपर आना, दूसरी तरफ आप पुश करें अपने आप को, 1 2 3 4 5, त्रिकोण आसन, 1 2 3 4 5, फिर ऐसे कर ले, एक्यूट एंगल बना ले, 1 2 3 4 5, नीचे जाना धीरे से, 1 2 3 4 5, हाथ के सहारा से नीचे होकर अपने ऊपर जाए, 1 2 3 4 5, घूमकर बैठ जाते हैं लेफ्ट एंकल पर, 1 2 3 4 5। अब ऊपर आ जाए, साइड करें फुल, 1 2 3, अंदर जाए, 1 ऊपर, 2 3, ऐसे स्ट्रेच, खूब अच्छी तरह स्ट्रेच बन गई। ओके, अब केवल एक ही चीज बचा है, इतने समय में पूरी शरीर का हमने आसन एक्सरसाइज नाइस एंड गुड रिदमिक मोशन में की, किसे डैमेज ना हो। अब एक बचा सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, उसके बाद जितनी आसन हो जाएगी, और कुछ ना हो तो केवल सूर्य नमस्कार कर लिया करें एवरी डे। 1 सांस अंदर, ओम सूर्याय नमः, सांस अंदर बाहर, सांस अंदर बाहर, नीचे जाते हैं, राइट लेग पीछे गया, स्ट्रेटन अप, दोनों पैर साथ हो गया, स्ट्रेटन योरसेल्फ अगेन, प्लैंक में नीचे जाए, अष्टांग आसन, केवल चिन नी और टोज छू रही है जमीन को और सब ऊपर है। भुजंग आसन, ऊपर जाए जितना हो सके, पर्वत आसन, ऐसे राइट लेग ऊपर ले जाएं, उसको नीचे लाकर फिर लेफ्ट को ऊपर करके नीचे लाएं, पुलिंग साइड, स्ट्रेटन अप, both legs together, come up. That's half the cycle. Now do same thing from the left side. 1 ऊपर गया, 2 सांस बाहर, पैर छूकर लेफ्ट लेग को पीछे करते, स्ट्रेटन अप, पुश योरसेल्फ, दोनों साथ में हो गया, प्लैंक पोजीशन, अष्टांग आसन, भुजंगासन, पर्वतासन। लेफ्ट लेग पहले ऊपर गया, फिर राइट लेग स्ट्रेच, राइट लेग इनसाइड, स्ट्रेटन अप, बोथ लेग्स टुगेदर, कम अप। एक हुआ, अब 2 साइकिल और करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, हो गया। 3 सेट्स ऑफ सूर्य नमस्कार हमने किया, तो उतने ही कर लिया करो एवरीडे, आसन पूरा हो जाएगा। फिर थोड़ा देर के लिए प्राणायाम कर ले और थोड़ी मेडिटेशन, 5 मिनट, बस 5 5 5 15 मिनट में हो जाएगा आपका कार्य, ठीक है। अब हो गया, आप करते हैं सिर आसन में करता हूँ, आप सर्वांग कर ले आसन। उसके लिए
ओके जी, तो मैं स्थिर आसन करूंगा, फिर उसके बाद में योग निद्रा करेंगे। पहला था ये, इसको मैं ले जाता हूँ, देखो टायर्डनेस हो गया है, सीखता हूँ फिर भी कोशिश। दूसरा, और सिरासन। ओके, तो आसन सब हो गया। आप करते हैं शवासन, लास्ट आसन, द बेस्ट आसन. Everybody loves shavasana, yeah? Everyone likes doing shavasana. They like sleeping. They don't want to wake up even. Yes, अच्छी बात है, सोना भी जरूरी है, समय के साथ सोइए मत। अब लेट जाते हैं शवासन पोजीशन में, ऐसे हो गया। आप करते योग निद्रा, ठीक है? तो आप lie down flat, your head is straight, hands are a little bit away from your body, legs are a little separated as well, and your eyes are closed but your inner eye is open. Your ears are wide open, you're listening to me. At the same time, you listen to your body. This is the only time that you get that opportunity to talk to your body. So let's make most of it and go through the ride of your body. So we say, we are a drop in the ocean in terms of universe, but the truth is we are the ocean in a drop. So ये जो शरीर है ना, the whole body is a reflection of the entire universe. But to know the universe, you have to know your body first. To be healthy, well, and balanced, you have to understand your body. The doctor can't actually give you that. Oh, it's your responsibility. So breathe in, pala. So the subconscious part of your body, the most essential, important thing is breath, prana. We have 10 types of prana. So the first 5 are the important ones. We'll go through them. The first one is prana, called prana itself, which is breathing inside. So breathe in. As you breathe in through your nostril, observe the passage of the breath through your nostril, through your windpipes, into the lungs, some 800,000 alveolar spaces. Oxygen and air becomes blood, and blood through hemoglobin goes to the heart, and heart is the machine which pumps to the 50 trillion cells in your body. So you go through this journey of seeing what is happens and be gracious, show gratitude that this air that we breathe in has been there for 4.23 billion years old, or at least the atmospheric environment, which has been there at least 1.96 billion years. So we are breathing that, and that makes us alive. So just concentrate on it. पूरी की पूरी अंदर ले जाए, पूरी शरीर को अपने आप में देखिए, उसकी जो आपकी प्राण की शक्ति पूरी शरीर में उसका इम्पैक्ट बना रहे, और at the same time visualize the entire space, this infinity. There is no end to it. So our body also has this 99% is space. Everywhere there is space. 1% is electrons, protons, neutrons. The blood, the body is viscous. There's space everywhere. It's like the whole universe. There's space, unlimited, infinite space. So that's reflection of your prana. दूसरी बार सांस लेते अंदर, खूब गहरा सांस. Take your breath down through your windpipe and follow the path to the lungs. But this time concentrate around your belly button and concentrate on your exhalation. So that was breathing in. Now we breathe out.
As you breathe out, visualize from head to toe how the blood returns the carbon atom from what we eat and like carbohydrates, fat and things. Carbon removes through carbon dioxide, this component of your body. So breathing out. And that is reflective of the air that we breathe, about 5 liters of air daily or in one breath we take. And it determines your exhalation component of it determines your mind status. So your coordination, your balance, your proprioception. Now breathe again. The third component of the breath is called saman. So pehla the pran, then what was it? Pran, apan, and now it's called saman. The saman component of the breath reflects the Agni, energy Shakti. Agni reflective of the sun, the nuclear fusion in the sun that produces the impact. Every second, sun gives you so much of energy to the earth that the earth needs for the whole year in one moment of its impact on earth. It takes about 8 minutes for the sun rays to reach earth. But what humans are doing, because we are so short-sighted, we don't understand, we are fighting over oil. Indirectly, the war in Russia and others are doing, proxy Ukraine for America, is oil as well, petrodollar. But we don't know how to utilize this. Sun gives us so much energy in one impact. It gives us energy which will last the earth 1 year. In once it takes about 8 minutes to reach that impact. But it's our inability to understand the power. So the sun's energy, Agni Shakti, in the body it's reflected around your tummy area above the belly button by, it's called Jataragni. So again, digestive processes, weight balance. You need to understand your body to help yourself lose weight and have a good weight, BMI index and all these things. Only one thing, dieting is good, but it's not going to fix things. You really need to go inside of yourself too. Now breathe again. Deep breath. Follow all the other 3 steps that I said. Now the fourth one, bring your attention to the chest area, heart. Anahat, Hit Pradhan, it's called. There is an energy center, which obviously the machine part is the heart, which pumps the blood. And that's how we live. Anahat. So that energy that drives through it. So it's reflected by what's called Vayu or Jala. So Jal, 70% ocean, 70% fluid inside. Heart pumps 5 liters of blood with plasma. So making sure your fluid component is balanced by making sure you have the best drink of the world is still water. There is nothing better than water in terms of having a good drink. So make sure you take a lot of good, just water, don't soda it or anything. So it gives you shitalta, cohesion, balance of life. You know how water is still, then you can really see the flow of a lake or a river. Your body, when it's like that, still, then you can go to the depth of it. Otherwise, it's space and solid. Water is there to give you that balance to the body. And earth itself is reflective of that. Without water, you can't survive. Now, the fifth component, breathe again. Follow the first 4 parts. Now, fifth one is bring your attention towards the upper part of your neck, your head, and move yourself from head to toe. It's called Vyam. So blood circulation, movement through your body and reflective of your physical body, your emotional status, and ultimately your deepest point is the electromagnetic frequency, the vibrations, and still we are far, far away from understanding that depth. We know physical body well, medical science, we manage many things, cutting, chopping, treating, then chemical drugs, things.
Then we have some things like nuclear medicine, atomic structures, atomic things coming in slowly. It's still at a physical level. But beyond that, there is body. That's why we can't fix depression, anxiety, mental illness. We are struggling to fix it because it's another plane of existence. You have to understand first what it is and what are the factors that actually manipulate these things. Then you can help treat people. We know very well for physical components of what brings illness. So we are able to make a vaccine, we are able to target therapy. But how do you target your emotional state, the Sukshma Sharir component? And the ultimate is the beyond that, from the astral body deep inside, there's a component of energy, spirit that drives, which is beyond these two for you to know yourself truly. So that takes time to understand. So that's 5 breath, and there are 5 upran. So, lower level forms of pran called Nath, Kurma, Karikal, the Dhananjay, which is peristalsis, hiccups, birth process, and other functions within the body that happens to this pranic Shakti. Now breathe again. So now put your attention from breath to what makes us from 2-cell conception to a 80, 90, 100, 200 kg person. It's all food. That's all it does. What you put in your mouth, you have to be very careful what you make of your body. Because body again does it subconsciously. What you feed, it doesn't know right and wrong. With the inner aspect is just a cyclic thing. But you got the brain to know what your hand should bring in and what your mouth should chew. Because thereafter, the passage of esophagus, the stomach, the small bowel, large bowel, whatever capacity physiology happens is beyond your control. It's subconscious, like the breath. What you do is not realize is damage your microbial population. The microbiome health is very essential component of your good physical health, mental health as well. Enteric neural system, it's called. It balances so many things inside. So it's not only being morally correct or ethical or religious or anything. It's about your body. What happens? It's a science in itself. What you put in your body is your responsibility. You don't have to be fearful of anyone giving you punishment or anything. No. What are you doing to your microbial health? So be mindful. So expulsion process so that the whole health of your body remains, because after breath, it's food and water. Now take your attention again through your third eye to the excretory functions of your body. So urination, excretion, perspiration. If these four components are not in the body, you'll die of poisoning. Again, it's run subconsciously. So visualize the passage, the kidney, the ureter, the bladder, the urethra, the GI tract, urination system, excretory system, perspiration. And then take responsibility of take my dog for a walk, does her things, but she's very careful to make sure she covers it. She won't leave it open anywhere, or otherwise I should pick it up and throw it in the rubbish bin. What do we do for our male? What do we do? We are perspiring every day. We are taking out all these toxins out of our body. How do you balance that? We are damaging the earth itself. That's why you need to do yajna. It's a process of actually purifying the air around you. It's your responsibility. When you put it too much into a religious manner things, you don't understand the context of what is required to be done for you as a human being. Instinctively, animals and plants, and they do their part in making sure they look after the planet. But it's the humans who don't. So this is a simple thing again. That's why you need to do this yajna, a functional part of it to cleanse your house, your breath, your toxins, what you release in the air. I mean, we made serious system and other things, which is very good. But then there are other components to it, the toxins that we release. Breathe again. Now bring your attention to your hands, the panja,
your kalai, your koni, your elbow, go up to the neck, reed, your haddi, vertebra column, go down, adi, poli, come to the good knee, to the pelvic bones, the bone structure. Watch it deep inside. They house all these important organs, and they are run through a positioning of moon and sun. So Chandra Nabi helps regulate and organ hormone secretion, chemical mediators. Surya Nabi with Jatharagni balances your digestive process, secretes the primary hormones from thalamus, hypothalamus, your pituitary gland, stimulates all these hormones, otherwise you can't function. Its impact on pineal gland, endorphin, serotonin, dopamine, oxytocin, nitrous oxide, dilatation of blood vessels so that you don't get heart attack. But if you don't think of this in that manner, only think cholesterol, 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 it's gonna help, but not completely, because there's a primary pharmacy in your body in terms of like oxytocin, what through nitrous oxide, what it does to your vessel wall. So be mindful more deeply of your own body, your thyroid, your parathyroid, your thymus, your bone marrow, your lymph nodes, your immune system. If anything, COVID learning is try and look after your immune system, immunity. So how do you make sure you produce good cells in your body and not destroy your adrenal glands, which we are doing every day because of fight, flight response? And that's done through yogic pathway, which is stimulation of your vasovagal tone, autonomic system, the subconscious that I'm talking about. So you get rest, repair, regeneration, creativity in your body. So vagus nerve runs from your brain stem, 10th cranial nerve. And it has humongous function, which is subconscious autonomous, autonomic. Pupil dilation, your beauty of your face, reduction of your heart rate, your blood pressure, salivation, secretion of digestive juice, peristalsis, pancreatic juices, the entire system. That is what balances your adrenal gland. And unfortunately, it is not a pill or some kind of just your mind control and mind activity doesn't bring this subconscious expression of yourself. That's why yoga is called fusion of your body. Like you go inside and express yourself completely. Now bring your attention to your two eyes, two nostrils, two ears, and your taste bud. These are antennas to your body, which has a direct impact on your mind. Mind is a matter, as I said. And you want to express into energy form, there's a pathway through yoga. You make it energy. That's why you can have so much energy. Because otherwise, mind itself will exhaust you. And expression is through either excretory function, reproductive function, your hands, your legs, or your talking ability. These are the components which run this body. And then the mind gives you this delusion of thinking the ego is the master, when in true sense you are irrelevant. Each of us, even earth itself is irrelevant in context of the creation. So breathe in, take your attention to your tailbone, follow your path from the left side Ida, right side Pingla, in the middle Sushumna, from tailbone Muladhara, up Swadhisthana, up Manipur, up Anahat, up Vishuddhi, Trikuti Yajna, right up Sahasra, Brahmudra, right on the top of your head. Expressing yourself through each of these energy centers makes you ultimately go into the astral component, the Suksham Sharir, from the physical body into your astral component. And then you can have the option of actually traveling into the Brahman, or the universe itself. If you know the body, then you can take this plunge of outer body experience, remove yourself. You can see yourself lying down as a piece of, like a body log. And from the ceiling, you can watch yourself down.
Go further to the International Space Station and you can observe Earth itself. It like spins around 1600 kilometers per hour, orbits around the sun around 200,000 kilometers per hour. Gravity is not zero, but at that point, the speed of the movement is same as the movement of the Earth. So the equation itself becomes zero. But it's that the speed of Earth that moves around the sun. So you feel that it's your duty. It's actually it's human ability to do it. Why not do it and move further into the Milky Way, Akash Ganga? Have a feel of the 9 planets, sun, the distance of sun to moon to Earth, and the presence of Earth itself. Now realize that Earth itself, within 2 billion stars and planetary system, is irrelevant. The planetary system in which we are, Alpha and Centauri or Andromeda, Metromeda, all this, our distance from, there are hundreds of what's called parallel universes like your planetary system. Slowly we are realizing this. And your thought of choice of one you make, another choice is going to another parallel universe at the same time. And this is now actually being accepted by the physicists, that the parallel universe, the metaverse component, big word now, meta everywhere. Well, that's what expresses, and our ancient sages, they all wrote this in Vedas. They didn't have a Voyager like planetary system or curiosity on a Mars to go and look. No, they had this capability of using your body to move through the, and the system that is there, the Saraswati clusters, the Virgo clusters, beyond that, understanding time and space becomes linear. It's a human construct where the wave particles become energy, where the mass itself is always energy. Otherwise, we will keep separating them in a dichotomy manner. Your mind becomes energy all the time. And your expression of your body at different sheets that are can take you through the ride of these different, like wormhole, like, we are going round and round at the moment to reach Mars. Elon Musk is doing that. But there's a direct way of going through the wormhole. How do you travel through that? Otherwise, why one light year is about 30,000 human years, and the next closest Earth-like planet is about some 20 million light years. It is impossible to reach there by any kind of construct or human construct. So that's just this universe, our universe. There are multi-universes like that. And end of it, there is what's called dark energy, dark matter. That is beyond. And today is actually, or yesterday was our New Year. It runs from this month, our month, which covers from March 20th. So yesterday was the day of Hindu New Year. In India, whole India, by different names, it's celebrated. It's based on this principle of actually human last mantra ago, Manu, of this period of Earth is about 1.96 billion years since then. We are here with this constitution called Vedas. And in the Kali Yuga that we are going through what's called 7 mantras. There are 14 of them. And they're about Satyug, Treta, Dwapar, Kali Yuga. Each of together makes one Mahayuga. There are 71 of Mahayugas that make a mantra. And there are 14 mantras. We are only in the 7th mantra. And we are 5,126 years of this Kali Yuga, which is 4,700 something years. So we are nowhere near anywhere, whatever people say destruction, it's got long time still. And there are about 7 more mantras left. 71 of the mantras makes one kalp. One kalp is 4.32 billion years. That's one Brahma's one day, and the same for a night.
5.96 billion years it becomes. Then there are 21 of that. So this sign, this is what they wrote, our rishis and sages in the Vedas, to describe creation is something, a possibility of all of us. So keep traveling, feel the Brahman, the Kham Brahma, get your energy, remove yourself, come back, International Space Station, to your, Earth itself, to your home, to your body. Feel it, feel the energy, because we are electromagnetic frequency anyway. We are the vibration that actually functions at the most deepest level. That's how we function. And you go subatomic, and the most deepest component of atom is the space only. So that's what we are. So breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. And come and sit. So that's Yog Nidra, taking a ride through your body and being able to understand your body. Then you can find what we are looking for, moksha. And sort of I took, because it's Hindu New Year, I took you to the journey of how old each of these things are. And as humans, this is our duty. Dharam arth kam moksha ki prapti, to everything. But if you don't learn this part, we fail as humans. So that's what I try and actually share with you. Whatever I learn, I share. By sharing, I learn myself, and everything in the world, as we all know, if you share, then you grow in yourself. By holding on anything in your life, you become sick. So it is a duty for all of us to do. And my Maya is learning very quickly everything as well. Hopefully she will know. All this knowledge will be sitting in her for next life. Okay, now, how do we stimulate our vasovagal tone? So expression of our autonomic system, the subconscious mind, is through pranayam. The asans that I showed helps. Muladhara, Swadhisthana, Manipur, we did Nabhi, we did Anahat, we did for Vishuddhi, but now it's targeted. So while exercises help us sit and get our muscles done, and some stimulation, the real action actually of expressing our vasovagal tone is done by pran kriya. So we'll do pran kriya. We'll start with Vishuddhi. So breathe in. So I talked about oxygen, how we are basically prana, shakti, different forms of those pranas. So you breathe in through your nostril, breathe out through your nostril. When you breathe in, push your tummy, belly button out. When you breathe out, push your belly button in. So it moves like that. That's why the asans are important, the exercises. Then it gives you this strength in your shoulders, in your chest, in your muscle. So otherwise it becomes very painful. Air pran, Shakti, is one way of removing those 60,000, 70,000 thoughts that are damaging us. You see, we wake up out of the bed, suddenly the head is full of thoughts. Your energy, whatever you gain by 7 hours sleep, is gone, because these thoughts will drain you by the time you reach your work. You are finished already. So focus on breath. It removes that kind of monkey mind that we have. Apart from oxygenation, so cells are healthier, it has an impact on our astral body. If it's too hard, do you sit like that? You can use chair, or you can do Sudarshan Kriya. So this is a bit easier. You do the same thing. When the hand goes up,
your tummy goes out. You breathe, your lungs get full. When your hands coming down, you push your belly button in, so you exhale all the dirty air. I've realized that doing these exercises, actually, I don't have to do the weights or anything, because the impact of the breath, the amount of weight it puts on your body is actually same thing. You are able to harness this energy. So again, Bhastika Pranayam. Nothing, this is a good exercise. If you don't want to learn about anything, it's actually very good exercise. You don't have to run to a gym, you can sit and do it even. One more time, Bhastika Pranayam. Okay, so that's Bhastika now in this time, sweating already. Made you sweat. I didn't damage my ankles, I didn't damage my knees or anything. Just sitting, I was able to start sweating. Secrets of our rishis, they did these things, they wrote it for us. Now we'll do what's called Agnisar. So we breathe in and then breathe out, then hold the breath as in what's called kumbhak. And when you are holding it, then move your belly button, try and move your belly button out and in. So you're targeting your Jataragni center. So breathe in, when it's out, and hold it, yeah? Holding the breath. Initially, it's hard, maybe only 5 seconds, and 10 seconds, and 15 seconds. So Swami Dayanand, as I say, he was able to hold it for like 30 minutes. His breath, he used to be able to hold it like that. So yogis have a lot of power. They harness this energy within them. Breathe out and hold. Be mindful, be with yourself, just be now for this moment, 1 hour, 2 hours that we have in the week. Just be there. That is the most precious time that you can have for yourself. It's healing your body, stimulating you, taking you to the path of inner engineering and far, far more than just normal daily things. Breathe in again, one more time. So whenever you do this, keep your TV off, try and not actually get, distracted by anything. Just 2 hours of your day, once a week,
just completely be in yourself. You'll realize that how helpful it is in your life. So we did Bhastika, we did Agnisar. Now let's do what's called Kapalbhati. So Kapalbhati, Kapal means the fontanel, opening metaphorically of the fontanel, is one of the best pran kriyas, exercises. It's basically, it takes through a journey of entire reason that at a very deepest level what humans should achieve in their lifetime, not at least not in this lifetime, might die 10 lifetimes, but at least if you start following that path, you might be able to actually take it, because it stimulates the entire chakra energy centers from Muladhara, Swadhisthana, Manipur, Nabi, Anahat, Vishuddhi, Nashikagra, Trigudi, right to the Sahara level, Sahasra level. Okay, so let's do, and at your own pace do it. Don't have to compete with me or anyone. As I say, yoga is a de-stressing exercise. You should not stress about it. It's nothing right or wrong. The important thing is to try and do it. So repetition makes habit. Habits, repetitions cause memories. Memories makes habits. Habits give you temperament. Temperament becomes personality of a person. So that's what you become over time. So wanting to do and repeating is more important than being perfect in anything, because you can't be. You all are trying to achieve those things. So don't be there at the end. Be part of the journey rather than see the end part. Yeah. So later on, it will actually, in 10 minutes, it will close, which then we'll rejoin. Okay, let's do the Kapalbhati. So say, do it for a few minutes, sitting straight. And this is a breathing out exercise. Yeah. So we did inspiration with Bhastika, then we did Agnisar, we stopped the breath. Now we are doing exhalation exercises. So it's breathing out only, and subconsciously you create a vacuum and you get enough. So I'm pushing my belly button in, and the air is coming out. Maya. So yeah, like this. Be straight. You can use your hand on the back like this. It gives you stability. Your shoulders are straight, your neck is straight, your spine is straight. So close your eyes and concentrate on yourself. If you are distracting, say prana mantra, Om Bhu, Om Bhua, Om Swaha, Om Maha, Om Jana, Om Bhu, Om Bhua, Om Swaha, Om Maha, Om Jana. Keep repeating so you are focused. Okay.
Unfortunately, we can't keep going, but you probably get the idea now after doing for a year or more now that you don't want to come out of it. Actually, once you are into it, it gives you so much of peace and happiness. You want to keep doing the breathing beside. But I have to break it so that we can finish it. But in your own time, when you get into your rhythms, you can do it. It's very, very peaceful, very helpful. So that's Kapalbhati. Now we'll do Ujjayi Pranayam. Ujjayi Pranayam is vibrational exercises for your throat, Vishuddhi, Anahat Chakra. So you breathe in through our throat, breathe out through your throat, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Now put your chin on your chest and put more pressure. Lift your neck up, close your right nostril, breathe out through your left. So this is what is vibrational, yeah. When we talk about electromagnetic frequency vibrations, the sound, this energy maybe little bit felt by doing this pranayama. You can feel the vibrations, but because we don't feel it and don't see it, doesn't mean it's not truthful. We can't hit our heart ourselves without the stethoscope. So we need special antennas to understand the suksham component of the body. So one more time. So that's so we've done. So we did what? Bhastika pranayam. We did Kapalbhati. We did Agnisar, and now we just completed the exercises for throat. Now we'll do what's called Vaikumbha. So this is a three-phase pran kriya, in which there is deep breathing in, abhayantar vritti, then deep breathing out, vahi vritti, then holding the breath which is out, which is called kumbhak. Yeah, so you'll feel the impact of how it becomes deeper and deeper to help you become intuitive and go inside yourself. Abhayantar, vahi, hold, मूल बंद, जलंधन बंद, उदान बंद. When you can't hold, when you breathe in, imagine you are showering inside. Yeah, suksham sharir. So sthul sharir, shower in the, you do it. Suksham sharir, this is what you do. From really down from Muladhara right to the top of the head. So one more time, Abhayantar vritti, Vahi vritti, Vaikumbha.